की, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हां ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी। केटीआर साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हां अकबर साहब छुक 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 चलेगी। आपके पास ना छुक छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है सर, पूरे शहर में चल रही। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू कम ऑन दिस रिकॉर्ड एंड say this, sir. If I am wrong, sir, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir. Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA. He used to stand and he used to say, "Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona." So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro. I remember Rashekar Reddy Saab, he stood up and he said, "Akbar will do one thing, we'll go to Delhi, we'll see the metro. You are saying the metro is very good? Yes, we'll do it." Satyam tha saab, Satyam ko diya gaya tha Maitas, ulta Satyam ka Maitas. फिर वो सत्यम डूब गया, माइटास से चला गया। राजशेखर रेड्डी साहब, we with the delegation went to Delhi, sir. We saw the metro, और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया। मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है सर? ठीक है, हमको नहीं दिए ना, हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है। हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है। हम रक्शे में थे, हम रक्शे में ही खुश है। मगर पुराने शहर के लोग मुंतजिर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो। प्लीज मेट्रो को लाइए सर। सर रीजनल रिंग रोड सर has a component of 158.6 kilometer northern road and 189 southern kilometer road, which makes almost 350 kilometers ring road sir. सर ये रिंग रोड के बारे में भी पूरा northern part will cost 13,522 crores and southern part will cost 12,980 crores and the total outlay of works is 26,002 sir. Sir, about this going further ahead sir, मैं हैदराबाद के ताल्लुक से ये भी बोलूंगा सर कि हैदराबाद में CPP, sir, when Mr. Suresh Reddy was the speaker, sir, I still remember, I said, "Suresh Reddy Saab, I was in my 20s. Then I said, I am in my, almost in my 40s. इतने साल से बोल रहा हूं, सर, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट, चारमीनार." तो ही सेड, "अकबर साहब, खुशखबरी है, अब चारमीनार बदलेगा, पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट होगा। 10 साल हथेली में जन्नत दिखाते रहे BRS, आ जाएगा। चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं हुआ सर। उस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब, किरण कुमार रेड्डी साहब, रोशैया साहब, सब साहब बोले सर, "No, Akbar, young man." I remember Roshaya Saab telling me, "Young man, don't worry. Young man, don't worry. Charminar pedestrianization will be completed. I am assuring you, young man." I said, "Sir, I respect you, sir." Sir, तो अभी भी सर बजट में चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट करिए। सर, it is such a beautiful architectural designs are there, sir. Sir, I have visited various cities in the world, sir. Various cities, sir. Sir, I have been to Milan, sir. The fashion street of Milan resembles the same architecture of Pathargatti, sir. Why can't we restore our heritage and protect the heritage, sir? What is wrong in that, sir? Sir, I had proposed a tramp also, sir. I spoken to a France company. They came, they met Mr. KTR Saab also when he was a Minister for Municipal Administration, to run a tram from Naya Pul to Charminar in the median which is there in Charminar. People think we do not want the whole city to have development. No, we want the whole city to develop, sir. But it is so unfortunate that let be any government, they do not want to improve the living standards of the people of old city. They do not want to improve, but at the same time, they call us. हमको चोर बोलते हैं। लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं हैं,
ना चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते हैं, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है? लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स, आई हैव ऑल द डिटेल्स सर। आई विल हैव अ डिबेट इन द डिमांड ऑन पावर सर, बट सेइंग दैट कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को, क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा? क्यों तो तुमको रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा? क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं ओल्ड सिटी? नहीं, इनको चुबाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेस्ट्रेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बागयाम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए सर। देयर आर मेनी इश्यूज सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC सर। The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam, sir. What is the speed, sir? What is the speed a vehicle is moving, sir? What are the kilometers that we are covering in an hour, sir? Alternate roads. Sir, these people, they developed only Gachibowli and that area. They never developed old city, sir. पूरा हजारों रुपया वहीं डाले सर। SNDP, SRDP सर, इसमें भी नाला डेवलपमेंट आया था, हमने फ्लाईओवर्स का दिया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हाफिज बाबा नगर में, बल्लागुड़े में फ्लाईओवर जब दियो बोलते KTR साहब बोलते थे अकबर भाई दे देंगे आपको, दे दिए जियो हो गया भाई काम, बोले नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। होते होते साहब अब मैं बूढ़ा होने आ गया, सब व्हाइट बाल हो रहे हैं सर। अब Sir, at least, sir, I expect that Revant Reddy Saab, who's a very good friend of mine. Yes, I want to come on record. Yes, I want to come on record. Yes, he's a very good friend of mine. Not now, not now. It goes back to some 35, 40 years back. We are very good friends. Yes, we are very good friends. And my friendship will be there with him. Personal level, but at the same time, as the leader of MIM and he being the leader of the house, I am going to do my responsibility, and I am sure he will also do his responsibilities. By hearing to me, by listening to me, by accepting the criticism and trying to do the work which has not been done from so many long years. Yes, sir. I hope that, sir. Sir, going further ahead, sir, about Dalit Bandhu के checks दिए, sir. मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा दलित बंधु का दीजिए सर। सर, ट्राइबल वेलफेयर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माय लर्नड फ्रेंड मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब इज आल्सो देयर। सर, आई विल जस्ट रीड आउट वन थिंग and then I'll say that, sir. So the Dalit Bandhu scheme was virtually put on hold after Congress government came to power, sir. Lakhs of applications were there. It was stopped. In 23-24 financial year, BRS government has allotted 17,700 crores for Dalit Bandhu as against the previous year expenditure of rupees 2,000 crores. However, not a single rupee was given for this, sir. Sir, ये इसके बारे में हो गया, sir. Tribal welfare, SC, ST, SDF, sir. So the state budget 24-25, Bhatti Saab has allocated 33,124 crores for SC, SDF and 17,056 crores for ST, SDF, totaling rupees 50,180 crores, which is really a massive amount. Which is really. Yes, sir. Sir, we hope and trust the government will sincerely and effectively spend all the allocated funds under SC, ST, SDF, since there was huge shortfall in the expenditure on both SDF in 23-24 financial year. The SC, SDF allocation was 36,750 crores, but the actual expenditure was only rupees 14,649 crores, 23-24. The ST, SDF allocation was rupees 50,233 crores, and the actual expenditure was only 10,399 crores, and 23-24, sir. The total allocation under SC, ST, SDF for the year 23-24 was 51,983 crores, but the expenditure was only 25,048 crores, sir. So this is the real allocation. I don't know whether the government is aware. Sir, with your kind permission, sir,
I may be given a permission just to show this one thing, sir. Sir, here, national channels from last 2 days, they are running a scroll and having a debate saying that SC/STs allocations have been reduced and minorities have been given 3,000. They were carrying the figures which were given by INPR from your department, sir. Isme, they gave wrong figures. From your department, they gave wrong figures. And not one challenge, sir. Even Doordarshan carried this stating that SC/STs